Assalamu alaikum everyone. I hope you guys are doing well. And today we are going to do atomic structure questions. Basically, it's for O levels grade 9, and my plan is to basically help you out with the revision for your midterm exams. So we'll start with the very first topic that's pretty basic. We have already seen the questions for purification techniques, kinetic theory. अगर वो फिर भी रिवाइज करना है तो I'll be happy to help और उसको हम दोबारा से कर सकते हैं. So today what I'm going to do is I'm going to go over the topic for a few minutes and then we will solve a test paper that I made for a class a few years back. And this from it will cover all the important things you need to know for this chapter. So the topic here or the chapter here is atomic structure. Okay, so that's the one that we have. Now in atomic structure, the first thing you need to know is this, obviously, what's inside the atom. You need to know that atom is special because it's the smallest particle with the properties of an element. So that's important. You can't just say it's the smallest particle because that is wrong. So a few words that you need to know for this chapter. The first one is atom. What exactly is an atom? Another word you need to know about is nucleus. And based on that nucleus, you need to know atomic mass. And that atomic mass is basically also called nucleon number. Okay, so nucleon number. Another word that you need to know is atomic number. And that is also called proton number. And that's a much better way of saying what it is because proton number explains कि वो है क्या. Another word you need to know about is isotope. And another term you need to know about is ion. And then within ion, you have the cation and you have the anion. So ये हमारी कुछ vocabulary है. ये वो words हैं जो हमें पता होने चाहिए. So let's go over them one by one. Okay, so atom. Atom is the smallest particle with the properties of element or with the ability to behave like an element or chemical properties of the element. So that's important for atom. वरना atom में कोई और special बात नहीं. It's not the smallest, clearly not. Nucleus is the part of the atom which is at the center, which is heavy and which has protons and neutrons. Protons and neutrons, because they are inside the nucleus, तो nucleus में जो कुछ होता है उसको हम nucleon number बोल देते हैं. तो इसका मतलब है कि nucleon number क्या होगा? It will be protons plus neutrons. Okay, so that's what we know. Protons and neutrons, they're in the nucleus. तो जो भी nucleus में वो nucleon number है. But protons only is proton number. वो ज़रूरी क्यों है? Because this decides the element. Okay, and this decides the isotope of that element. So अब isotope क्या है? Isotopes are atoms of the same element but different mass. तो इसका मतलब है कि element same होगा but mass different होगा. जिसका मतलब ये हुआ atomic number same होगा, atomic mass different होगा. और in other words, protons same होंगे, neutron different होंगे. और उसकी वजह से isotopes बनते हैं. You can't say कि ये एटम आइसोटोप है और ये नहीं है बिकॉज सारे एटम्स आइसोटोप्स होते हैं. So अगर मैं सोडियम की बात करूँ तो सोडियम का एक है, उसका मास है 23. So सोडियम 23 वी राइट इट लाइक दैट एंड सोडियम 25 दोनों ही आइसोटोप्स हैं किसके? सोडियम के. अच्छा, इसी तरह हमारे पास लेफ्ट साइड पे ना दो नंबर्स लिखे होते हैं 23 और 25 जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है. तो हो सकता है यहाँ पे 11 लिखा हो, सॉरी हो सकता है यहाँ पे 11 लिखा हो, यहाँ पे 23 लिखा हो और यहाँ पे भी 11 लिखा होगा और 25 लिखा हो, लेट्स सपोज. अब इनका मतलब क्या है? द स्मॉलर नंबर ऑन द लेफ्ट साइड. ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, बट इट हैज़ टू बी द स्मॉलर नंबर. ओके, स्मॉलर नंबर टेल्स यू द प्रोटॉन. तो ये नंबर बता रहा है कि प्रोटॉन कितने हैं. और ये नंबर जो छोटे वाला बड़े वाला नंबर, ये अगेन ये भी ऊपर या नीचे हो सकता है, बट बड़े वाला नंबर इट टेल्स यू कि उसका मास कितना है. यानी कि उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन दोनों को मैं मिला लूँ, उसका एटॉमिक मास कितना है. तो जैसे मैंने आपसे कहा था ये आइसोटोप डिसाइड करता है. सो हमारे पास यहाँ पर ये आइसोटोप है 25 वाला और ये आइसोटोप है 23 वाला. और इससे हम पता कर सकते हैं कि वो कौन सा आइसोटोप है, उसमें कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने न्यूट्रॉन्स हैं, और इससे पता कर सकते हैं कि वो एटम कौन सा है. अच्छा, समटाइम हमारे पास यहाँ पे भी एक नंबर होता है, अभी तो इनमें नहीं है, जिसका मतलब ये है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में बराबर है. बट यहाँ पर अगर वो हो तो वो बनाता है आयन. सो आयन क्या है? आयन इज दैन एटम विद अ चार्ज है. और ज़रूरी नहीं है एक एटम हो, एक मॉलिक्यूल के ऊपर भी आयन बन सकते हैं. तो वो मोलेकुलर आयन होता है, उसको पॉलीएटॉमिक आयन भी कहते हैं. सिंपल सी चीज़ों के मुश्किल नाम रखे हुए
Chemists love that. So ion का मतलब है any atom or group of atoms with charge. तो यहाँ पे कोई चार्ज होगा, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, और वो जितना भी होगा ना उससे हम डिसाइड करेंगे कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं. तो हमारे पास 3 चीज़ें हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन. आपको वो निकालनी आनी चाहिए. तो यहाँ प्रोटॉन तो मैंने आपको बता दिया, लेफ्ट साइड पे छोटा एटम, छोटा नंबर. न्यूट्रॉन क्या होगा, लेफ्ट साइड पे जो बड़ा नंबर है वो मास है, उसमें प्रोटॉन्स भी हैं, न्यूट्रॉन्स भी हैं. सो प्रोटॉन को निकाल लेते हैं उसमें से. अगर प्रोटॉन को निकाल लेंगे तो खाली न्यूट्रॉन रह जाएगा, एंड दैट्स व्हाट विल डू. सो अगर मैं 23 माइनस 11 कर दूँ तो मेरे पास आएगा 12, और इस साइड पे 25 माइनस 11 करूँगा तो मेरे पास आएगा 14. तो इसका मतलब है इस वाले में 12 न्यूट्रॉन्स हैं एंड दिस वन हैज़ 14 न्यूट्रॉन्स. ओके, सो बेस्ड ऑन दिस वी कैन ईजिली फिगर आउट कि अच्छा किस में कितने न्यूट्रॉन हैं, किस में कितने प्रोटॉन हैं. अब इलेक्ट्रॉन का क्या करें. इलेक्ट्रॉन जो है ना, दैट डिपेंड्स ऑन दिस थिंग ऑन द राइट. तो अभी तो ये 0 है, जब नहीं लिखी हो तो उसका मतलब है 0 है. तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक इक्वेशन होती है, दैट इज चार्ज इक्वल्स प्रोटॉन माइनस इलेक्ट्रॉन, या इसको आप इस तरह भी देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन माइनस चार्ज. दोनों में से कोई भी आप इक्वेशन जो आपको आसान लगती है वो यूज़ कर लो. सो अभी चार्ज 0 है, तो इसका मतलब है कि अगर मुझे इलेक्ट्रॉन देखते हैं तो इस वाले में हो गए प्रोटॉन 11 है, चार्ज 0 है, सो आई जस्ट डू 11 माइनस 0, तो 0 ही इलेक्ट्रॉन है. और इस वाले में भी सेम चीज़ है, 11 माइनस 0. सो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, उसको मैं ई लिखता हूँ, आप पूरा लफ्ज़ लिखते हैं ना. एंड प्रोटॉन 11 है और न्यूट्रॉन 12 हैं एक आइसोटोप में, एंड 14 है दूसरे आइसोटोप में. सो वी कैन क्लियरली सी कि दोनों में सिमिलैरिटी क्या है. दोनों में 11 प्रोटॉन हैं, जिसकी वजह से वो सोडियम है. अगर ये नंबर चेंज हो जाएगा तो एलिमेंट ही बदल जाएगा. अगर 12 होता ना तो सोडियम ना रहता, मैग्नीशियम बन जाता. अच्छा, न्यूट्रॉन डिफरेंट है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये आइसोटोप है. कौन से वाला आइसोटोप है, दोनों, कोई एक आइसोटोप नहीं है. यू कांट से ये सोडियम है और ये सोडियम का आइसोटोप है. नो, ये सोडियम का आइसोटोप 23 है और ये सोडियम का आइसोटोप 25 है. दोनों ही आइसोटोप्स हैं, ठीक है. एंड इलेक्ट्रॉन से हमें 11 में, तो अभी यह आयन है नहीं, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है. बट इसको हम बाद में देख सकते हैं कि कभी हमारे पास ये आयन बन सकता है. फॉर एग्जांपल अगर हमें एग्जामिनर कहता है कि यू हैव मैग्नीशियम विद 2+ और ये 12 है और ये 25 है, तो अब ये हमारे पास एक आयन बन गया और पॉजिटिव चार्ज है, तो उसकी वजह से ये बनेगा कैटायन. कैटायन इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड एनायन इज ऑलवेज नेगेटिव. ओके, सो इसमें N है, उसमें T है. दैट्स वन वे ऑफ रिमेम्बरिंग इट. ज़रूरी नहीं है, मतलब अच्छा लगता है तो यूज़ कर लो. सो पॉजिटिव चार्ज कैटायन, नेगेटिव चार्ज एनायन. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. सो दिस वन इज मैग्नीशियम 25 एंड 12 एंड 20, सारा हम देखते हैं इसमें. प्रोटॉन मैंने आपको बताया लेफ्ट साइड पे छोटा एटम, छोटा नंबर, सॉरी, सो दैट्स 12. ओके, न्यूट्रॉन्स मैंने आपसे बताया लेफ्ट साइड पे दोनों नंबर्स का डिफरेंस. सो लार्जर माइनस स्मॉलर, दैट इज 25 माइनस 12. इस आइसोटोप में 13 न्यूट्रॉन्स हैं. और इलेक्ट्रॉन्स मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉन इज प्रोटॉन माइनस चार्ज, सो 12 माइनस 2 करेंगे और हमें मिल जाएगा 10. हेलो रामीन, हेलो जोहा, या अस्सलाम वालेकुम, या गुड टू सी यू हियर. विल कंटिन्यू टू डू दैट रामीन. ओके, सो वी हैव प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स. अब अगली बात जो द एग्जामिनर आस्क्स यू इज हाउ आर दीज इलेक्ट्रॉन्स अरेंज्ड. So for that you have to understand what rules do electrons follow. So electrons में क्या होता है, they are always arranged in shells. And first shell में 2 हो सकते हैं, second में 8 हो सकते हैं, third में 8 के बाद उसको पसंद नहीं है 8 से ज़्यादा रखना. Sometimes होते हैं कि वो 8 से ज़्यादा हो जाए, which is fine. अगर कभी एग्जाम में वो दे दे, आपने परेशान नहीं होना है. बट यूजली वो 8 के बाद ना अगले शेल पे जाना प्रेफर करते हैं. सो यहाँ पे हम देखते हैं, आपने पहले शेल से स्टार्ट करना है. फर्स्ट शेल हैज़ 2, सो 10 हैं, तो उनमें से ऑब्वियसली 2 तो हैं ही हमारे पास, तो फर्स्ट शेल में 2 चले जाएंगे. एंड सेकंड शेल में 8 हो सकते हैं, और मेरे पास टोटल 10 है, तो आई कैन पुट 8, सो दैट मेक्स अ टोटल ऑफ 10 एंड आई एम डन विद ऑल द इलेक्ट्रॉन्स. अगर मैं इस सोडियम को देखूँ ऊपर, सो दिस सोडियम हैज़ 11, सो फर्स्ट शेल विल हैव 2 बिकॉज फर्स्ट शेल में मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है. रियली, वेयर डिड यू सी मी? एंड सेकेंड शेल हैज़ 8. क्यों 8? मेरे पास 11 प्रोटॉन है, तो उनमें मेरे पास ऑब्वियसली
अभी काफ़ी इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं एंड देन बिकॉज ऑफ दिस 2 and 8 थिंग यू हैव 1 एट द एंड, तो मेरे पास लास्ट में 1 बचेगा. टोटल आपने 11 करने हैं और आपने फॉलो करना है इसको कि फर्स्ट विल हैव 2, सेकेंड विल हैव 8, थर्ड विल हैव 8 or more and last one will also follow the same thing. Okay, hello Zamin, good to see you here. So we have 2, 8, 1. Okay, so that is how this is arranged and this is called electronic configuration. अच्छा, अब इसके ऊपर एग्जामिनर क्या पूछता है? एग्जामिनर विल आस्क यू कि अच्छा ये आपको बता क्या रही है. सो ये हमें क्या बता रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स टेलिंग मी द लास्ट शेल हैज़ 1. सो इसका मतलब है इसका ग्रुप 1 है. सो लास्ट शेल, वैलेंस शेल ग्रुप बताता है. एंड हाउ मेनी टोटल डू आई हैव? 1, 2, 3. So that means this is the period. I have 3 shells, so ये third period में होगा. Okay, so based on this we know that where I can find this in the periodic table, and this goes both ways. अगर मुझे periodic table में उसकी location का पता है, अगर मुझे पता है किस period में है, किस group में है, so I can easily figure out from there कि अच्छा ये कौन सा atom है, इसमें क्या structure है, किस तरह से. Alright, so without further ado, let's do this question. I will give you a worksheet for this. So आपने इस क्लास के बाद फ़ौरन उसको करना है, फ़ौरन नहीं करना, कल कर लेना. And so that if you have any issues तो आप मेरे पास वापस लेके आओ उनको. Okay, let's see. An atom of element Q contains 19 electrons, 19 protons. यहीं से हमें पता लग गया उसके ऊपर 0 चार्ज है, वो एटम है. और 19 प्रोटॉन्स होने का मतलब क्या है? 19 प्रोटॉन्स का मतलब ये है कि वो पीरियोडिक टेबल में हम देखेंगे वो पोटेशियम होता है. सो दैट इज पोटेशियम. 19 प्रोटॉन्स. ये भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है. आई डोंट नीड इट. ओके, सो दिस इज व्हाट आई नीड टू नो. सो दिस इज 19, दैट्स पोटेशियम. Oh yeah, okay. Okay, moving on. Table shows the atomic structure of 4 atoms. Which atom is not a metal? अब ये metal किसने कहाँ से बात लिया है? Metal usually वो होते हैं जिनके last shell में 1, 2 या 3 होते हैं. इससे ज़्यादा होते हैं, but हम उनको नहीं देखते. Okay? So 1, 2 or 3. That's what we are going to look for. और एक और आसान बात है, आप periodic table सामने रखो और सिर्फ प्रोटॉन्स को देखना है. एलिमेंट कौन सा है वो सिर्फ प्रोटॉन बताता है, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन सब एक्स्ट्रा है, हमें ज़रूरत ही नहीं है उसकी. सो हमें उसने बोला कि मेटल नहीं है वो. लेट्स सी, पीरियोडिक टेबल देखते हैं. 18 कौन सा है? आर्गॉन. यही मेटल नहीं है, पता लग गया. मुझे इलेक्ट्रॉन्स देखने की ज़रूरत नहीं है, न्यूट्रॉन्स देखने की ज़रूरत नहीं है. बट अगर पीरियोडिक टेबल में वैसे हम देखें, 19 इज़ पोटेशियम, क्लियरली मेटल है. 20 इज़ कैल्शियम, क्लियरली मेटल है. सो मुझे यहीं से पता लग गया. आई विल चूज टू इग्नोर ऑल ऑफ दिस एंड दैट्स इंपॉर्टेंट. इट विल सेव यू टाइम कि आपको कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए. जस्ट लुक फॉर दैट. ओके, व्हाई यू डिलीटिंग ऑल दीज टेक्स्ट? ओके, विच स्टेटमेंट अबाउट सब एटॉमिक पार्टिकल्स इज करेक्ट? प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. ये बात ठीक है. सी, इलेक्ट्रॉन्स, दे विल ट्राई टू कंफ्यूज यू. इलेक्ट्रॉन नहीं होता न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रॉन इज आउटसाइड द न्यूक्लियस. न्यूट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, गलत है. प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, यस, दैट वन इज करेक्ट. So we'll just choose this. Okay. Well, saving students since 2017. Okay. An element S has a proton number 18. The next element in the periodic table is an element T. अच्छा, अब इसको ना we'll quickly look in the periodic table. Number 18 है तो इसका मतलब है argon है. तो S हो गया argon. और next element is 19, so that is potassium. You will get the periodic table in the exam. क्लास में भी आप साथ उसको keep a copy of that. So let's see. अब देखते हैं क्या है. Element T has one more electron than element S. अब ये गौर से देखना. It will have one more electron, but not in the outer shell. Because argon के last shell में 8. It's in group 8. And potassium के last shell में है 1. Because it's in group 1. So इसमें 1 है, उसमें 8 हैं. So even though it has one more electron but not in the last shell, so this one's wrong. Element T has one more electron shell than element S. ये बात ठीक है, because it's a new period, that means a new shell. So yes, this one is correct. All right. Moving on, the symbol of two atoms may be written as shown. Okay, X and Y, 23, 24. Okay. But notice that their mass is the same. ये देख रहे हो आप 52 and 52. This means कि वो isotopes ऐसे हैं, या
आइसोटोप्स क्या एटम्स ऐसे हैं जिनमें टोटल मास सेम है, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, इसके प्रोटॉन डिफरेंट है, इसके प्रोटॉन और हैं, तो इसका मतलब इनके न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट होंगे, क्योंकि न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे तो टोटल 52 होगा ना. अगर इसमें एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा आ गया है तो एक न्यूट्रॉन कम होगा. दैट इज हाउ दे विल बिकम द टोटल नंबर will become the same. So they are different elements with different number of protons, different number of neutrons. And why are the different number of protons? Because proton number different hai. So let's see. They are different elements because they have different protons. That's what I'm looking for, and that's option B. They're not isotopes because even though they have different number of neutrons, they're not the same element. Isotope होने के लिए same element होना जरूरी है. Okay. Which number is different for isotopes? Clearly we know that is number of neutrons, yeah, number of nucleons, whatever is in the nucleus. So C. Table shows the nucleon number and number of neutrons in this, okay. I think there is a mistake here. I'll just fix it. Okay, which statement about W, X, Y and Z is correct? Okay. Let's see. Number of neutrons हैं तो number of protons पता कर लेते हैं. We'll just subtract them. 30 minus 18, 12. 30 minus 20, 10. 30 minus 20, 10. 40 minus 20, 18. Okay. W and X are isotopes. Problem is, I think इस question में थोड़ा सा problem है कि इसका numbers ही नहीं है मेरे पास. So I'll just skip this question. An atom has 8 more electrons than atom Y. Okay. Atom Y is a transition metal, so उसके 8 more. At student 1 says they're in the same group, student 2 says they're unreactive. I think both of them are incorrect. उसकी वजह ये है कि transition metal कोई भी उठा लूँ, मुझे क्या पता कि कौन सा transition metal है और फिर उसके बाद उसके आगे 8 कहाँ पे होगा. I don't know. I can't figure this out for sure. अगर मुझे थोड़ा सा भी शक हो ना, even then I will not pick an option because जब तक मुझे उनकी आइडेंटिटी कंफर्म नहीं है मैं अपनी तरफ से स्टेटमेंट्स नहीं दे सकता. So इस वजह से C is going to be my answer. Which atom has 2 more electrons than an atom of noble gas? 2 more electrons का मतलब ये हुआ कि वो ग्रुप 2 में है. इसकी वजह क्या है? नोबल गैस का मतलब है लास्ट शेल फिल हो गया था, तो उसके ऊपर जितने भी इलेक्ट्रॉन आएंगे वो नेक्स्ट शेल में जाएंगे. ओके, यस यू विल नॉट फेल केमिस्ट्री, एंड यस दैट गिव्स मी इट्स इन ग्रुप 2, सो कैल्शियम होगा. देयर यू गो. ओके, सो आई एम गोइंग टू स्किप दीज 2 क्वेश्चंस बिकॉज बस वैसे ही. ऑलराइट, यूरेनियम इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट. रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो होते हैं विच हैव अनस्टेबल न्यूक्लियस. अब उसकी अंडरलाइंग रीजंस क्या हैं, वी डोंट फुली अंडरस्टैंड दैम, बट ऑब्वियसली देयर आर वेरी ब्रिलियंट साइंटिस्ट हु हैव वेरी गुड थियरीज ऑन के क्यों वो अनस्टेबल होता है. नॉट रेलिवेंट टू अस, वी जस्ट नीड टू नो कि अनस्टेबल होता है, एनर्जी देता है, ब्रेक डाउन करता है, रेडियो एक्टिविटी होती है. इट इज़ डेंजरस फॉर हेल्थ, बट इट इज़ यूजफुल फॉर पावर जनरेशन एंड फॉर मेडिसिनल पर्पसेस. सो वो हमें उसका काफ़ी फ़ायदा है, यूज टू ट्रीट कैंसर एंड ऑल. ओके, डिफाइन द टर्म आइसोटोप. आइसोटोप क्या होता है? अभी हमने बात की थी, दे हैव 2 मार्क क्वेश्चन है ना, तो इसका मतलब है 1 मार्क विल बी कि उसमें सेम क्या है और 1 मार्क वुड बी फॉर उसमें डिफरेंट क्या है. सो इट इज़ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, या आप कह सकते हो एटम्स विद सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड different number of neutrons. So 1 mark is for saying कि उसमें same क्या है, and 1 mark is for saying कि उसमें different क्या है. Sure, you have to specify कि number of protons same है या they are atoms of same element, and you have to specify कि उसका different mass है या they have different number of neutrons. Explain why 2 isotopes of uranium have same chemical properties. Interesting. What does chemical property depend on? Chemical properties depend on the valence electron, not just any electrons, valence electrons. Okay, so we'll say they have same number of valence electrons. Remember, if you don't mention valence, you will not get a mark. And of course, the second mark is for specifying. 1 mark is for this and 1 mark is for saying कि वो same है. Okay. अब ये भी कह सकते हो कि the chemical properties depend on the valence electrons. That is why that is the case. Okay, this question. This is about finding relative atomic mass. अब relative atomic mass की definition मैं आपको लिखवा देता हूँ, बता देता हूँ, because they can also ask you for a 2 mark question for that definition.
Yes, Zoha, you're absolutely right. What is relative atomic mass? It is, again, two parts to this definition. 2 marks here, na? It is average mass of an atom or of all natural isotopes of all natural का वर्ड आप लिखो या ना लिखो, वो लेवल्स में फ़र्क नहीं पड़ता, IGCSE में फ़र्क नहीं पड़ता. Natural isotopes of an element, and that's 1 mark so far, compared with or compared to, and this is a tricky part, 1/12 of carbon 12. If you don't like to write that, you can also mention it like this. Both of them are acceptable. And this is the second mark. Okay? Don't forget to discuss all of this. Okay, now let's see हम इसको निकालते कैसे. Average निकाल लेंगे ना, multiply करेंगे. So we'll multiply this. So the percentage or abundance is given. I have neutrons, I have protons, but I don't have the mass. तो मुझे सबसे पहले उसका mass निकालना है. So I'll add it up. 92 plus 143, that is 235. ये इसका mass है. And 92 plus 147 is 239. So ये इसका mass है. Now here's what I have to do. I've multiplied the percentage with the mass. That's what I'll do. So 72% multiplied by 235 and 28% multiplied by 239. Add it all up. Whatever answer you get, that's going to be our answer. You can also do it this way कि आप divided by 100 बाद में कर लो. Like you just multiply them, you add them up, and then you divide by 100. Both of those are acceptable. They will give you the same answer. So it will obviously give us some answer, and based on that answer we can see कि वो उसका AR क्या है. Always write your final answer there. In fact, I would say कि जो भी final answer आता है उसको square किया करो for math, physics, even chemistry. Okay. Calcium is a metal. Fluorine is a non-metal. Draw the atomic structure of atom of calcium and fluoride ion. That's an interesting question. Let's try calcium atom. So सबसे पहले आपने क्या देखना है? How many electrons does it have? So calcium has 20. Don't draw the nucleus, just mention the element. Okay? Remember this. Don't draw the nucleus. Just mention the element. Now 20 means 2 in the first one, 8 in the second one, 8 in the next one, 2 in the last one. अब अगर मुझे ये नहीं आता तो मैं क्या करूँगा? Periodic table में जाऊँगा. Periodic table में calcium is in 4th row. Okay? Don't forget to count hydrogen and helium as first row. Okay? So it's in 4th row. So I'll know I have 4 shells. And the last one, it's in group 2. So last one में 2 होंगे, तो बाकी automatically fill हो जाएंगे. So I'll draw 4 shells. Okay? And I'll just keep on duplicating it. ठीक है, इसको बड़ा कर लेते हैं और फिर इसको बड़ा कर लेते हैं. Okay, there you go. So let me put the shells there. I put the shells there. Now let me put the electron. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then 8 again. Just remember that you have to draw either a circle or a cross and try to put them in pairs. अकेला अकेला बना सकते हो आप, mark नहीं जाएगा, but I would suggest put them in pairs. Okay, fluoride ion. That's the one they asked us for. Now, fluoride is F with 9. But the thing is, it's an ion. That means it has a charge. So, it's in group 7. It will gain an electron. क्यों? 8 बनाना है ना? तो 7 है तो एक और बनाने के लिए electron gain करना होगा. So, F will have a -1 charge. Okay, so now again, F in the middle. And then I have what? 9 electrons with 1 more. So, that's a 10 electron total. So, you'll have 2 and 8. Remember, you have added an electron, okay? So 2, 8. So I'll have 2 shells, okay. Okay. And so 2 in the first one, I'm using a different symbol, cross. You can use the same symbol here because they are not really bonded. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7, 8. And then because it's an ion, I should put square brackets with a negative charge. Don't forget to do that, okay? And there you go. We have found it. Okay.
How does the atomic structure explain why calcium is a metal while fluorine is a non-metal? So look at the last shell. Again, remember, chemical properties depend on the valence shell, the last shell. अंदर वाले shells की कोई matter, कोई उनकी value नहीं है for chemical reactions. So why calcium is a metal? It has, so calcium, you don't have to write the whole name. Just say Ca. Calcium has 2 electrons in last shell, or you can say fluorine has 7 valence or 7 outer electrons, and from there you can go that it will loses them, or it gains 1. So that shows that they're metal and non-metal, because metals try to lose and non-metals try to gain. Why is fluorine in group 7? 7 valence electrons or 7 outer electrons. Why is calcium in period 4? 4 shells. Okay. Define the term relative atomic mass. अभी हमने बात की है. Describe the electronic configuration of calcium ion. You already know the atom. 2882 है, so it will lose these last 2, giving you 288. Okay. So that will be the 288. You can write it like that, or you can put 2.8.8. That's also acceptable. Okay. So there you go. Yes, if you don't draw the bracket for the anion, you will lose 1 mark. Explain in terms of subatomic particle why an atom is electrically neutral. What does this term mean? It means it doesn't have a charge. So now here's where the students make a mistake. They just say that protons are equal to electrons, but they haven't really talked about the electrically charged thing at all. They've just assumed that examiner will figure out कि अच्छा प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, इस वजह से वो इक्वल हुए हैं, तो इसकी वजह से वो कैंसिल हो गया. नहीं, you mention it. You tell the examiner that this is where the charge comes from. So we'll say that protons are positive, electrons are negative. We don't assume that examiner knows. We just explain it. कि charge आया कहाँ से? Of course you'll write the whole word, not just P or positive sign. No. Write the whole word. In an atom, protons are equal to electrons. So overall charge is 0. And that is how we know it's neutral. Makes sense? Okay. And there you go. We're done with this worksheet. I will send a similar worksheet. It's a slightly similar, not exactly the same. So I'll share that with you in the group. If you haven't joined the group, there's a WhatsApp group for every grade 9, 10, 11, 12, 13. A1, A2 is that as we know them. And from there, you can easily ask for help. It's all free. So feel free to join them. And we have a very healthy community there. We help each other out. And this YouTube channel is also one of the many steps we take to help each other out. Any questions? Okay, so Zoha, your question is, what are subatomic particles? Anything that's smaller than atom. So subatomic, smaller than atom. So basically he's talking about protons, electrons, and neutrons. Okay. So yeah, that is atomic structure. I hope you guys understand it. If there's any issue, feel free to ask in the group. Okay. I'll see you tomorrow. Take care. Allah Hafiz.